Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meets. So I welcome all the participants and all the guests for today. And today we are here to start a new discussion on a program on, what is the topic? Anybody who's seen my post? What is the agenda for today? Emotions and EQ. Emotional health. Emotional health. Gunjan is on the preparation for tomorrow. Yeah. Okay. So yes, the topic is emotions and emotional intelligence. That's what the topic is, right? So when we hear emotions, how many of us have experienced emotions which have taken us from morning till evening? We have gone through the whole range of emotion. पहले कभी बहुत दुखी थे, फिर ठीक ठाक हो गए, फिर बहुत खुश थे, फिर दुखी हो गए, फिर खुश हो गए. So there is a whole range of emotions you are experiencing. कभी surprise, कभी shock, कभी disgust, कभी sadness. So we human beings can experience all range of emotions in one particular day itself. How many of you have experienced those kind of things? So if you're experiencing varied emotions in a day, that means all shades of emotions in a day, or if you are only having one emotion in a day, which one do you think is more practical for you? आप किस कैटेगरी में आएंगे? बहुत सारे इमोशंस एक दिन में या फिर एक ही इमोशन एक दिन में? उसके प्लसेस और माइनसेस दोनों के हैं, लेकिन किस तरीके? बहुत सारे. Okay, very good. So Gunjan says too many emotions. Many emotions can come during the day. Yes, welcome Priya. So the discussion is, what are the kind of emotions, different types of emotions that you can experience during the day, correct? So that is about, and we will of course come to what is emotion. वो हम आ रहे हैं उस पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे what is the definition of emotion. Emotion है क्या चीज, पहले तो वो पता लगे हमको. सोर्स क्या है इसका? Randomly कहीं से भी कुछ भी emotion आ जाता है या there is a source, right? And then we will see what are the kind of emotions normally people have in their day-to-day activities, and what is this emotional intelligence level that people talk of. Okay, so let us start with the first question. What is emotion? So I understand, first of all, जो हमने अभी background बनाया है उससे इतना समझ में आ रहा है कि we can have varied emotions during the day. So it will not be the kind of a same emotion throughout the day. If it is, we will look into it. Yeah, but normally we will have different emotions. We will have different emotions during the whole day, which is normal, which is natural. Okay. Now let us look at what is emotion. Emotion को कैसे describe करेंगे? Anybody? What is emotion? पहले definition. Connection is unstable, it says. Can you hear me? Can you hear me? It just passes and goes away. Okay. It doesn't stay away. Okay. It doesn't stay. Yeah, but is it okay now? Is it okay now? Any kind of emotion, it doesn't stay. It has to be passed on. Okay, you are answering to the question. I thought you were talking about this internet. Okay. Yeah. Okay. That's why I said, what goes away, emotion or internet? Emotion. Right now the internet is going away. I'm holding on to my emotion. Okay, so what did you say? Come again. I was thinking of internet. Very temporary. It's temporary. Emotions are temporary. What is emotion? I didn't ask you whether emotion is temporary or permanent. Temporary है, वो समझ गया हम, क्योंकि हमने कहा एक दिन में बहुत सारे emotions आ सकते हैं, तो obviously emotion temporary है, right? What is emotion? If I ask you what is the definition of emotion, क्या बोलोगे आप? Emotion experience तो सब करते हैं, है ना? विजय जी बताएंगे. विजय जी बताएंगे. आपको मालूम है तो आप बताओ. Feeling at a time. Feelings. मेरा ख्याल emotions is more like feelings. Emotion. So emotion is a feeling. Emotion is a feeling. So let the other question come. What is the difference between emotion and feeling? सोचो, आपको ये नहीं मालूम है इमोशन क्या है, आपको ये नहीं मालूम फीलिंग क्या है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कैसे कर सकते हो? Okay, I will not create too much of a suspense. So I will initiate the discussion and then give you some thoughts to think. And meanwhile, we will go deeper into it. So emotion, you can say, is energy in motion. Emotion. Okay. Energy in motion, which means
बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इमोशन। आपकी जो इमोशन है वो पावर देती है आपके एक्शन को। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सो एनर्जी इन मोशन इज द करेक्ट way of understanding what is emotion. And it is an aspect of, it is an element of mind, not aspect, it is an element of mind. So just like body has 5 elements, physical body जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है, 5 तत्वों से बना है ना? 5 तत्व क्या है मालूम होनी चाहिए सबको। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, करेक्ट? बेसिकली इट इज 4 elements, earth, water, fire and space, sorry, earth, water, fire and air. It is covered by the space. तो आकाश उसको कवर करता है इन चारों को। सिमिलरली हम जो ये ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी में क्या आएगा? सटल बॉडी में आएगा आपका ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट, विच इज द माइंड बॉडी। माइंड बॉडी या सटल बॉडी जो हम बोलते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट. So emotion is an element of the mind or the subtle body. Okay, that is where you need to understand what is emotion. So emotion is energy in motion. It is a force behind the action and it is an element of the mind. Everybody connecting with me? So 3 element hai mind ke: ego, emotion and intellect. First let us understand these 3, then we will dive into the second element of emotion. When you are operating, we are all human beings, we operate from the level of being, doing, having, correct? So we are human beings, हमारा एक being part है। उस being part को कौन चला रहा है? या तो वो ego है, lower self, या वो divine है जिसको बोलते हैं higher self। ठीक है? तो who are you if I ask you? Either you are operating from the level of being or ego, or you are operating from the level of being divine or higher self. Lower self, higher self सुना है सबने? So it is basically ego or your higher self or divine, correct? When you are operating from the level of ego, you will have some level of emotions. कौन से emotions होंगे? जो ego trigger करता है। और ego कौन से emotions trigger करेगा? Mostly negative, not mostly, all the time negative, correct? So lower self or ego will always trigger negative emotion. Higher self or divine part will always trigger a positive emotion. That is how the emotions get triggered or emotions get generated, you can say. If it is a new emotion, you can say generated. Otherwise, you will say it's an old emotion which got triggered. एक second, Vijay ji, आ रहा हूँ. Just let me complete. And when you say the intellect, intellect is what? Intellect is your power of judgment, right, wrong, good, bad, जो अक्सर हम करते रहते हैं, तो जिसको हम बोल सकते हैं intellect is governed by राग द्वेष, when mostly it is operating from the level of ego. ईगो के लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं तो नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे. इंटेलेक्ट विल बी गवर्न्ड बाय राइट, रॉन्ग, गुड, बैड. So that will be your level of life that you enjoy. And when you are operating from the higher self, positive emotions will get triggered and you will be free from raga dvesh and you will be connected with the divine. So the divine wisdom or pragya will dawn in you. So that is how you need to analyze or understand how you operate in life. Okay, now I will stop and I will take some questions. So Vijay ji was the first one to ask. Yes, Vijay ji, go ahead. Sir, so when we mention negative or positive emotions coming out of either ego or divinity, so what exactly, when you say energy in motion, what kind of emotions are we talking about and how they are different from feelings? Okay, a good question. So basically you are asking is first a difference between emotion and feeling. First I will handle that. Okay. So emotion and feeling. Emotion is something, and as we said, an element of the mind. तो वो माइंड लेवल पे है, सटल है, करेक्ट? एक ही इमोशन को बार बार सोचते हैं हम तो क्या होता है? अब एक थॉट है, उसके साथ एक इमोशन है और ये चल रहा है माइंड में. तो टेक वन थॉट और टेक वन इमोशन. मेरे सामने एक आदमी है, उसने कुछ बोला जो मुझे बुरा लगा और मुझे गुस्सा आ रहा है. ओके,
अब एक थॉट है, उसने ये कैसे बोला, उसकी ये हिम्मत कैसे हुई, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये थॉट है। इमोशन क्या है? गुस्सा। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, थॉट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, थॉट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या होगा? आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, करेक्ट, हाथ कांपने लगेंगे, सामने रॉड पड़ी होगी, रॉड उठा लूंगा और उसका सर फोड़ दूंगा। हो सकता है ये? हो सकता है। तो एक्शन वाज गवर्न्ड बाय इमोशन। इमोशन के बाद बॉडी में एक फीलिंग आई, the vibration that you are experiencing in the body, that is feeling. Feeling is always experienced in the body. Emotion is experienced in the mind. So did this process explain you what I'm talking of? एक thought आया पहले, उसके बाद एक emotion trigger हुआ। उस emotion को जब आप बहुत ज्यादा पनपने देते हो या नर्चर करते हो, तो it will be experienced as a feeling in the body. Sometimes the feeling is very obvious and you take an action. Sometimes the feeling is not very obvious. It will settle down at some part of the body and become a disease. So every disease is actually a feeling which has been manifested by a negative thought in your mind. Think of that. Yeah. So emotions are manifested through action. Emotions are executed in the form of an action, but they will leave a residue in your body, which will be a feeling, and it can manifest as if a prolonged feelings are there, it will be manifesting in some part of the body as a disease. माइंड में तो डिजीज आ ही गया ना, जैसे नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव इमोशन आ गया, माइंड में तो डिजीज आ गया। As a feeling, it will be a vibration in the body, and it will cause you some heartburns, some problem in the liver, some problem in the throat. Correct? If you prolong it, it will become a throat disease, or a liver disease, or a stomach disease. So all the diseases are actually feelings which have manifested in the body as a result of undigested emotions. तो जिसका स्टमक डाइजेशन प्रोसेस खराब होता है, क्या बोलते हैं, क्या इमोशनल इंडाइजेशन चल रहा है, क्योंकि इमोशनल इंडाइजेशन की वजह से फिजिकल इंडाइजेशन शुरू हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, जो भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, आर बेसिकली अनडाइजेस्टेड इमोशंस which are manifested into the body as a disease. Yeah. So think about it. Meanwhile, let me ask somebody else. So Vijay ji, did I answer your question by the way? आपको जवाब मिला? Okay. थोड़ा कुछ और है? कंफ्यूजन तो रहेगा, but it is okay. कोई बात नहीं, you can have a discussion. It will open up many things for other people. Sure, sure. So नहीं, go ahead. सर या मेरे को समझ में आया, एट द सेम टाइम इफ यू आर डूइंग सत्संग एंड यू आर डूइंग प्राणायाम एंड इफ यू आर डूइंग योगा, करेक्शन प्रोसेस में बाद में आएंगे ना सर, करेक्शन प्रोसेस में बाद में आएंगे। पहले पकड़ तो लें कि इमोशन है क्या चीज, फीलिंग क्या चीज है, और बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, What you are saying is right. If you do pranayama, meditation and all that, you transform your emotion, because emotion is changeable. So you can always transform and replace that negative emotion with a positive emotion. वो कैसे होगा? साधना से होगा। प्राणायाम मेडिटेशन करो, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव फीलिंग मैनिफेस्ट होगी, तो डिजीज से ईज में आ जाओगे, तो शरीर से रिकवर करना शुरू हो जाएगा बीमारी से। That's how pranayam and meditation helps you in recovering from the diseases. It's very simple. It is scientific. नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव करते हैं, तो आपकी नेगेटिव फीलिंग पॉजिटिव हो जाती हैं और बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। करेक्ट? प्रोसेस वही है। थॉट, इमोशन, फीलिंग, एक्शन, मैनिफेस्टेशन, डिजीज और ease. Ease and disease can be created in your body. Yes. All right. Very good. Very good. Let's acknowledge Vijay ji. Very good discussion. Yeah. And I'm sure it must have opened up many things for many people. So who wants to ask next? Who wants to go ahead? We will go slow in this because today is the first session. I don't want to bombard you with heavy gyan, but I will give you some basic information so that it is a good food for thought. Anybody else who has any question on emotion and feeling first? The emotion is in the mind, feeling is in the body. Does that make sense with everybody? Just give me a thumbs up. Does that make sense? Yeah, good. Now, any question on that? Emotion is energy in motion. It is a force. Yeah, go ahead, go ahead. Sir, is feeling like permanent? What? Like feelings are permanent? You tell me. Do you feel the same thing? Do you have the same feeling throughout the day?
unless and until we heal them, like the negative feelings. No, it's not a question of healing. Healing, of course, is as a healer, we will heal that negative emotion. But the question is, you change the emotion, the feeling will change, no? Hello? Hello? Hello, am I there? Are you there? Yeah. Okay, I'm there. Very good. Yeah, I can see all of you. Wait. Sir, एक second. Last 20 seconds, the voice was broken completely. If I change the network, it will be a problem. You So can I don't want repeat. to change You it. can repeat, please. Yeah, I will repeat that. But is it okay now? Yeah. Yes. Okay, good. So what I said was, what Gunjanji asked me was, is the feeling permanent or temporary Permanent? kind of a thing, right? So you Yeah. tell me if your emotion if is it is a negative feeling. negative or positive, it doesn't matter. Okay, If your okay. emotion is varying throughout the day, then the effect of that emotion will also be varying throughout the day. Yes or no? तो जैसे जैसे इमोशन चेंज होगी Yes. वैसे वैसे फीलिंग चेंज होगी कि नहीं? Now let me give you a हाँ जी. practical scenario. I as Shashi Dhar have different roles to play in life. Right now I am conducting the Zoom session. I am playing a role, right? So I have a separate thought process, very different emotion and a very different feeling in my body right now. I'm very enthusiastic, very energetic and very excited. So I'm sharing that pearls of wisdom or whatever words of wisdom are coming out of my mouth are basically making a difference in your life. So it is a totally different thing, right? If I'm talking to my friend after the call, after the Zoom session is over, and if he is having had some accident or he is having some misfortune, right? So my नहीं इस वक्त आप thought चाय की will बात change. करेंगे सर. So my thought will change, my emotion will change, my feeling will change. Then I come back, I am playing with my son. So my role has shifted. As per the role you are playing, you will have different emotion, different feeling throughout the day, right or wrong? Yes, sir. जैसे जैसे आपका रोल चेंज होगा वैसे वैसे ऑफिस में आप कुछ और होंगे, कलीग के साथ कुछ और होंगे, बॉस के साथ कुछ और होंगे, जूनियर्स के साथ कुछ और होंगे, घर आओगे वाइफ के साथ अलग होंगे, फैमिली के साथ अलग होंगे, बच्चों के साथ अलग होंगे, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, देन यू आर सडनली टॉकिंग समथिंग एल्स, यू स्विच द रोल. The moment you switch the role, possibly your thoughts and emotions will change and the feeling will change. Okay. The feeling is always corresponding to the emotion. Get? So Gunjanji, does that answer your question? Yeah, yes, sir. Very good. Yes, let's acknowledge Gunjanji. And anybody else who has any question? Yes, Anirudhji, go ahead. सर जी मैं पूछना चाह रहा था. हाँ जी बोलिए. सर ये जो हमने पहले बताया था कि ये जो है ईगो, ग्रीड, एंगर, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ये नहीं होना चाहिए, इसको मना, तो ये इनको नेगेटिव इमोशन मान लें. ये स्टेट ऑफ ईगो है सर, जो हम बात कर रहे हैं ना. हाँ जी. ईगो है जो है, ईगो के ऑपरेट जब आप करेंगे तो ये विकार हैं, ये संस्कार हैं, ये संस्कार हैं. इन संस्कारों से आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे. तो इनको नेगेटिव इमोशन माने ना माने, ये जो चीजें बिल्कुल नेगेटिव हैं, बिल्कुल नेगेटिव होंगे ये. अगर ये आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर की बात कर रहे हैं, इसी बात कर रहे थे ना आप, मैंने शायद यही सुना. हाँ जी. तो ये विकार हैं, ये संस्कार हैं आपके शरीर में, और ये या तो तामसिक हैं या राजसिक हैं. ठीक है जी. करेक्ट. तो ईगो ज्यादातर हम तामसिक कैटेगरी में लेते हैं और इमोशन हम ज्यादातर राजसिक कैटेगरी में लेते हैं. ठीक है. इमोशंस एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं. तो यू कैन से इमोशंस आर ऑफ टू कैटेगरीज. वन, नेगेटिव इमोशंस व्हिच विल गो टू द तामसिक लेवल, ट्रिगर योर ईगो. करेक्ट. ठीक है सर. एक थॉट आया, एक इमोशन आया, अगर वो इमोशन नेगेटिव है, मोस्ट लाइकली इट विल ट्रिगर एन ईगो. ओके. एंड अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट लाइकली इट विल ट्रिगर द हायर सेल्फ एंड इट विल टेक यू टू सत्वा. So understand, rajas is a very volatile situation. Rajas or emotion is a very fleeting thing. It is a very volatile situation. It can take you down to tamas or it can take you up to the sattva, depending on your sadhana and your journey. तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, इसको तो क्लेशास बोले गए हैं शास्त्रों में. ये तो क्लेशास हैं, पॉइजन है. तो ऑब्वियसली इट विल टेक यू टू तमस एंड इट विल टेक यू टू द, it will trigger your ego. Yes or no? How many of you are connecting with me? But if the emotion is of love,
कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, अब क्या ट्रिगर हो रहा है? हायर सेल्फ ट्रिगर हो रहा है। कहाँ जाओगे? सत्वा की तरफ बढ़ जाओगे। लड़ने, सर फोड़ने तो की जगह पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसकी जगह आप बोलोगे चल यार माफ किया तुझे। तो उसको तो पॉजिटिव इमोशन बोल दे। बिल्कुल पॉजिटिव होगा ना, जो सत्वा की तरफ जा रहा है पॉजिटिव है। हाँ, वो देखो पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव की जगह पे अगर हम तमस और सत्वा समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज नो, my friend Leslie is sitting there, he will quickly point out to me, there is nothing right, nothing wrong, nothing good, nothing bad. So he is right in that. So we will not say good or bad, right or wrong as such, quote unquote. What I mean is, if it is moving you forward on the spiritual journey, it is positive. If it is stopping you or for making you fall in your spiritual journey towards tamas, it is negative. That's what I would say. Correct? वरना पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा परसेप्शन, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग हमारा परसेप्शन है. And this is actually a function of the intellect which is hijacked by the ego. So the moment you can set aside right, wrong, good, bad, you will be free from ego. Ego को trigger होने से आप रोक लोगे, hence higher self को trigger कर सकते हो आप. So that is the whole point of what Leslie would say. I know that. So Leslie, I am speaking on your behalf. By the way, welcome. Good that you joined in. Yes. So how many of you are connecting with me? Or how many of you are ऊपर से चला गया, सर के ऊपर से चला गया? हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड. सो नाउ टेल मी, इमोशंस. सुबह उठे वेरी अपसेट, सुबह उठे यू शुड बी ग्रेटफुल टू द डिवाइन. जिंदा हो, सांस चल रही है. बहुत सारे लोग कल रात को सोए थे, आज सुबह नहीं उठे. मेरे को कोई बोलता है फोन करके, मैं सुबह अपसेट हूँ. एक फ्रेंड है मेरा, 9:30 बजे फोन करके बोलते हैं मुझे, मैं सुबह बहुत अपसेट हूँ. सुबह तुम्हारा दिन अभी शुरू नहीं हुआ है. All you had to do was thank God that you are alive. You should have been thanking God that you are alive, and you should be jumping out of the bed with full of excitement कि wow, new day, कुछ नया create करेंगे, मजा आएगा. वाह, बिल्कुल करेक्ट. Yes. So what exactly did you got upset? You slept with a negative thought. You slept with a negative emotion. Overcooked it overnight. ओवरकुक कर लिया अच्छे से. सुबह उठे, सर दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, दुखी आत्मा बन गए हो. हाँ, और फिर फोन करते हो, क्या करूं? राइट. तो यू टू अंडरस्टैंड, यू आर नर्चरिंग. आप पानी दे रहे हो, बड़ा कर रहे हो किसको? कैक्टस को. वो बड़ा होके आपको चुभोगा ही चुभेगा, कष्ट देगा, पेन देगा. Why are you nurturing a negative thought? Why are you nurturing a negative emotion? When you are a master of your life, you are a master of your karma, you are a master of your destiny, you should be having the control on the emotion. No? कितने लोग चैंटिंग करते हैं सुबह सुबह उठ के, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल. एक पेज वो लिखोगे, विल यू बी हैप्पी और विल यू बी सैड? No. You are invoking the divine in you. You are invoking the higher self. Obviously, positive energy ही trigger होगी. When you are in gratitude, do you smile or do you start crying? When do you give gratitude? When you give gratitude to the divine, are you sad or are you happy? नहीं, मैं बहुत चैंटिंग करता हूँ, but I am very sad. What kind of chanting are you doing? पूरा दिन भगवान का नाम लेता हूँ लेकिन बहुत एंजाइटी में हूँ. कौन सी एंजाइटी आ रही है आपको? एंजाइटी इज व्हाट? Anxiety has manifested into your body because you have been nurturing a negative thought, and then you say I was thinking of divine. Rubbish. You are telling lies to yourself. You are fooling around with yourself. औरों को बेवकूफ बनाओ, अच्छी बात है, अपने आप को बेवकूफ मत बनो. अगर आप को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, तो आप खुद लाए हो, वो अपने आप नहीं आते हैं. Why are you entertaining them? आप घर का दरवाजा खुला छोड़ के किसी भी इंसान को अंदर आके बैठने की इजाजत देते हो? कोई भी अंदर आ जाए, कोई जमादार अंदर आ जाए, कोई भी हॉकर, कोई भी वेंडर अंदर आके बैठ जाए आपके ड्राइंग रूम में, पानी लाओ, चाय लाओ, एंटरटेन करोगे उसे? तो क्यों नेगेटिव थॉट को एंटरटेन कर रहे हो? नॉट अलाउड. गेट लॉस्ट. टेल देम आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल. सुबह सुबह इसको नर्चर करोगे तो खुश रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे. कहाँ से नेगेटिव थॉट आएगी? कोई गुरु मंत्र है, कोई चैंटिंग है, कोई भगवान का नाम लो, कहाँ से नेगेटिव थॉट आएगी? बताओ ना मुझे. At one point of time, you can have only one thought, and you have decided to be a tragedy king, Dilip Kumar Devdas.
or a counterpart of that, मीना कुमारी, रोने में मजा आता है तुमको इसलिए रोते हो. So I've said too many things, perhaps harsh, but that is the only way I wake up people. My job is not to say good things here. My job is to wake you up. I was sharing that with Vijay ji. हाँ, कोई प्यार से उठता है तो मैं प्यार से उठा देता हूँ, वरना पानी डाल के उठाऊंगा, पर उठाना है. Yes, so somebody can share whatever you has come to your mind. Yes, Vijay ji, you want to share something? I had a question. अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि when you are in different roles, like a father or a husband or talking to a friend or in office, etc., there will be different emotions. But if you are in peace, love, and joy, and you are performing the necessary right actions in order to live well, तो फिर तो चाहे जो भी इमोशन हो वो पॉजिटिव एरिया में ही रहेगा ना, मोस्टली 99%. Perfect. Then you are established in pragya. You are sit pragya. यही sit pragya की definition है. Whatever be the situation, I am steady in the wisdom or divine wisdom. I am established in the divine wisdom. Sit pragya. अब कुछ भी हो जाए बाहर, I will be in love, peace and joy, and I will radiate love, peace and joy to everybody. Precisely. तो अभी इस स्टेट में अगर है आदमी, मतलब I mean, which is the natural state also, as you rightly say. Yeah, that it is a natural state, but people fall very soon, very fast. People you're fall in from natural there. state. So then why do you say that a lot of emotions come through the day? It should not. Ideally, if you are a perfect sadhak, it will not. But if you are a कच्चा साधक समझते हैं ना? हाँ, तो कच्चे अब थोड़ा साधक बहुत हैं. तो होगा, अगर आप 80-20 में भी हैं तो you're in good space. Yes. Then you are in the 0.00001% of the population. Let me tell you that. Yeah, but most of the people who are suffering, why are they suffering? सबसे वाली बात है कि journey is endless, but if you are in that zone, then it is okay. है ना? Yes, if you are in that zone, I'm not able to hear you. मेरी प्रॉब्लम है क्या? आपका कनेक्शन जो है थोड़ा गड़बड़ है आज. कुछ गड़बड़ हो गई है. अमित जी, आपको सुनाई दे रहे? तो मेरा नेटवर्क खराब है. Hold on. I think so. Yeah. I can't hear you. Can you hear me? Can you hear me? मुझे सुनाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है. अब ठीक है, आ गया. वो हेडफोन खराब था. Yes, Okay. yes. Go ahead. So I am in sync with you, Shashi Dhar ji. मतलब basically, as long as you are doing the right things on a daily basis and reinforcing yourself, you are in good space. Absolutely. You should always operate from the higher self, experience and express positive emotions, and be established in wisdom. Your job is done. Then you are moving forward on the spiritual journey, and you are moving towards sattva. Absolutely perfect. That's a great spiritual journey. Let's acknowledge Vijay ji for a wonderful sharing. Yeah. Though I missed part of it because of my network, but then it's okay. But I could get the sense of it. So good Vijay ji. Very good understanding. Yes, but most of the people who are suffering because you entertain negative emotion. So that it was to them that I was addressing in that harsh tone. Okay, wake you up. Right. So whoever has woken up can share something. हाँ, तो शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर कर सकते हैं आप लोग. अगर लाइफ में सफरिंग मिजरी है, it is because of the negative thoughts, negative emotions you are nurturing. Stop nurturing them. Stop. Only nurture positive emotion, positive thoughts. And how do you do that? Keep chanting. Do your meditation, do your pranayam, keep chanting, work on your spiritual growth. Welcome Ritu ji. Yes, so somebody share. What is opening up? Kya open up ho gaya hai? So as I said, today I will go a bit slow, but then I want all of you to get the value of this discussion. Yes. So everybody clear on emotions? Everybody clear on emotions? So what is emotion? Energy in motion. It is the second element of the mind, ego, emotion, and intellect. And it is very fluctuating. And it is the cause of the disease or the ease in your body. तो आप अच्छी हेल्थ में हैं, ईज में हैं, या फिर बीमारी में हैं, डिजीज में हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस.
Making sense? Now, how do you control these emotions, or how do you have a mastery of this emotion? So that comes to the next topic that we have, which is emotional intelligence. What do you understand by emotional intelligence? Does emotional intelligence mean that you experience only positive emotion all the time, just like Vijayji was saying? Is that emotional intelligence? Or emotional intelligence is something else? So what do you think is emotional intelligence? कौन बोलना चाहेंगे? Anybody wants to share? सुना है ना, EI level हम बोलते रहते हैं, corporates में बहुत यूज करते हैं. Emotional intelligence, what does it mean? It's more to do with relationship with others. Come again. It improves your relationship with others. Emotional intelligence is to connect with others and to understand others the way they are. Okay, so if you are emotional intelligence, if you have positive or high level of emotional intelligence, you can connect well with others. Point taken. But my question is, what is emotional intelligence? And how do you develop that level? Yes? How to deal with your emotions, even the positive and negative, both of them. So how do you deal? Tell me that. What will make you intelligent, Oh, emotionally intelligent? I only deal while I'm chanting. That's it. That's the only way I do. So your sadhana is a way. Your sadhana is a way. Yes, my sadhana is the way to deal with my emotions. Okay. All right. So that is how you develop emotional intelligence, through your sadhana. So you could have yoga, Yes. You could be doing practicing meditation or pranayama. All this will help you to master your emotions and minimize your negative emotions and increase your positive emotions. So that's way you can handle it. Very good, Gunjanji. So good understanding. But my question is again, what is emotional intelligence? Emotional intelligence could be how I handle hold on, one at a time. कौन बोल रही हैं? ऋतु जी, आपके बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है? सात्विक, एक मिनट. उन्हीं के बैकग्राउंड से है. तो अमित जी, you will have to get. Now is मेरा it okay? नेटवर्क थोड़ा डाउन हो रहा है. हाँ जी, sorry. हाँ, बोलिए, ठीक है. Can I speak? Yes, sure. Yeah. So what I feel emotional intelligence is how we react to the various situations in our life, whether positive or negative. Are we disturbed by too much negative happening, or do we remain stable in positive and negative situations? Like we don't get carried away with very positive emotions. मतलब we don't get on a very high, and जब बहुत negative होता है तो we don't get too much low. To be able to stably handle all situations, and to handle them with wisdom. Okay. Handle them with wisdom. Okay, that is the one word I was looking for. Okay, whatever you said earlier was an explanation of that, so which is okay. Right. So let's acknowledge Rituji. Very good. Okay, so whatever is your understanding of emotional intelligence is absolutely perfect. But let me give you the exact pinpointed definition, which will help you to actually improve your emotional intelligence level. Ready for it? Kamar Siddhi kar lijiye. Pay more attention. Yeah. So emotional intelligence is described as the wisdom. Obviously, it is a wisdom. Yeah. So it is emotional intelligence is a wisdom to experience and express the emotion in a natural way. Okay, I'll repeat that. Emotional intelligence is the wisdom to experience and express all the emotions that you can possibly have. Okay, whether positive or negative, doesn't matter. You have to experience a negative emotion and express a negative emotion in a natural way. If there is a situation is good, you are experiencing positive emotion, then you experience and express positive emotion in a natural way. Okay, so experience and express, समझ में आ रहा है? Natural way क्या हुआ? Natural way is what? Without suppression. Suppress नहीं करना है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्सप्रेस करना. करेक्ट?
हाउ डू यू एक्सप्रेस? बाय एक्शन, क्योंकि एनर्जी, इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन. तो यू हैव टू एक्सपीरियंस द इमोशन and express that emotion through an action. Okay, so I'll give you some examples so that it becomes clear to you. मान लीजिए किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकली, 10 करोड़ की लॉटरी निकली. अब उसको बताया कैसे जाता है? सीधा उसको बता दिया तुम्हारे 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, एक सांस ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे नहीं आएगी. हाँ, हार्ट अटैक हो जाएगा. क्यों? वो इमोशन एक्सपीरियंस तो कर लिया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया एंड हार्ट अटैक. गेट माय पॉइंट? So experiencing and expressing that emotion of surprise or shock in a natural way is the wisdom to do that is the emotional intelligence. Making sense? इसका एडवाइस भी ले लेते हैं. किसी के कोई एक्सपायर हो गया, आप उनको सडनली न्यूज देते हैं दूसरे को, एक्सीडेंट हो गया एंड दैट पर्सन हैज डाइड and the person goes into a shop, statue. रोना ही नहीं आया. दोनों केस में क्या हुआ बताइए? एक को हार्ट अटैक हो गया, स्टैच्यू बन गया, हार्ट अटैक हो गया बिकॉज ऑफ द सरप्राइजिंग, इतना जबरदस्त खुशी महसूस हुई और अचानक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया एंड ही कोलैप्स्ड. सेकंड में ग्रीफ इतना ज्यादा आया, कोई चला गया तो क्या होगा? ग्रीफ होगा, दुख होगा. वो दुख इतना ज्यादा था, एक्सप्रेस नहीं कर पाया और वो मर गया. So both are important, experiencing it and expressing it, and in a natural way. Natural way means should not be suppressed. इसीलिए जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं? 13 दिन का जो हम शोक मनाते हैं, क्या है? रो. पेन है, somebody has gone, there will be grief, there will be pain. Cry enough for 13 days and after that everything is over. Now you live your life normally because the emotion has gone. वो जो ग्रीफ था, इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन ए नेचुरल वे. तो सब लोग आते हैं, रोते हैं, उसको रुलाते हैं. कोई नहीं रोता तो क्या बोलते हैं? उसको रुलाओ वरना उसकी जान खतरे में. सुना है आपने ये? एक्चुअल में नहीं देखा होगा तो पिक्चरों में देखा होगा कि उसको रुलाओ. द ग्रीफ हैज टू गो आउट. इंपॉर्टेंट. सो द विजडम टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस इमोशन इज इट. कोई बिल्कुल स्टैच्यू है, 10 करोड़ की लॉटरी निकली, कुछ फर्क नहीं पड़ा. कोई मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा. यू आर इन बैड शेप. You have completely become a dead stone. You are a log of wood. You have no emotions. वो apathy हो जाता है फिर. Apathy means no emotion. So you should not be having no emotion also. So you should be having emotion. You should have the wisdom to experience and express those emotions in a natural way. That is emotional intelligence. It doesn't mean that you will never have negative emotion. Death कभी भी आ सकती है, कोई भी accident कभी भी हो सकता है, कोई भी नुकसान कभी भी हो सकता है. These are life situations. You will get the negative emotions, but you have to experience it and express it in a natural way. That is emotional intelligence. So let us take what are the natural emotions. पहले emotions के कुछ basic understanding लेते हैं. There are 5 emotions which we normally experience, and every human being will experience that in daily activities. Okay. So what are these 5? This I have read somewhere and I have categorized it in that way. You can of course have your own priorities. No? So somebody is in facing a tough situation, obviously he will say negative emotions are a very natural thing. मैं पूरा दिन दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ. हाँ, परेशान आत्मा, दुखी आत्मा. कोई रोता रहता है, जिसको हम बोलते हैं रोंदू. तो कोई रोंदू है तो वो रोता रहेगा, दुखी रहेगा वो हमेशा, राइट? बट बेसिकली द इमोशन जो होते हैं, the first and the most important emotion which a human being should and will experience is love. Positive. First and the most formative emotion is love. Now you have to understand. Okay. When I say love, love is not only a thought. कभी वो thought के level पे आता है, कभी वो emotion के level पे आता है, कभी वो feeling के level पे आता है. Sometimes it will be a form of attitude, and sometimes it is a state of being. If it is a prolonged state of being of love, then you are possibly, when you say you are in love, बोलते ना, I've fallen in a state of love. So falling नहीं बोलेंगे, rising बोलेंगे. So when you rise in love, you come into a state of love where everything is rosy. आपको कुछ गलत लग ही नहीं रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. Yeah. So imagine the time when you were romantically involved
Okay, और कोई जो भक्ति योग में है, full of unconditional love for the divine, then they are completely into a bhajan singing. उनको दुनिया का होश ही नहीं है. I won't say they are in the category of Mirabai, but yes, anybody who is singing bhajans and completely lost into the divine world, they are in a state of love, a state of being. So love can be a state of being. It is a thought. It is an emotion. That's fine, Tony. That's fine. Okay. Right? So it can be a state of being. It can be a attitude, a mindset. It can be an emotion. It can be a thought. But understand this, at any point of time, human being, the first and the most foremost emotion that he experiences, or one should experience and can experience, is love. How many of you understand this? Love is the basic emotion, very, very strong, very powerful, and very essential also. Somebody who is devoid of love will have a very barren life. Correct? And somebody who is full of love will be always creative, bubbling, and full of excitement and enthusiasm. It could be love for the divine, it could be love for a partner, it could be love for anything. Love for the job that you're doing. Okay, so any kind of experience of love will fill you with creativity. Yes or no? Yes. So in the dual world, in the dualistic world, that means in the materialistic world that we are living in on planet Earth, in this form, there is always duality. तो जहां पे आप लव एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, वहां पे उसको ऑपोजिट एक्सपीरियंस करोगे. Just like, let us take the example of light, sun and planet Earth, right? Now sun is the source of light and heat for the planet Earth. जहां पे वो लाइट पहुंचती है वहां लाइट है, जहां लाइट नहीं पहुंचती है वहां डार्कनेस है. बट डार्कनेस का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? डार्कनेस का कोई एग्जिस्टेंस है? यू मे एक्सपीरियंस इट, बट इज देयर एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस? नो. एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस. लाइट की एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स में लाइट की एग्जिस्टेंस है. जहां लाइट नहीं पहुंचा वहां डार्कनेस है. यस और नो? यस और नो? या गुड. So similarly, understand, the only emotion a human being actually experiences is love. And the absence of love is, what is the opposite of love? कौन बताएंगे? What is the opposite of love? Go through your life. फटाफट. Hatred. Yes, Ritu ji. क्या है? Hatred. Hatred. Okay, that is what we are taught in school, right? Love को opposite hatred है. I am looking for a spiritual answer. Yeah, it is right. Partially it is right. Pardon? Indifference. Indifference. Okay. Indifference. All right. Tell me something else. Everybody. There is no right answer. There is no wrong answer. अमित जी आप नहीं, आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ. आप नहीं. हाँ जी. Sadness. Okay. A body without life. Lifeless. Okay. So without love, Life. we mean lifeless. Okay. Sadness. Okay. Sadness. I got it. Alok ji. Very good. Okay. Anybody else? Anybody else? Huh? Duality. Divinity. The feeling of duality. DUAL. हाँ, duality नहीं. Love का opposite क्या है? I understand what you're trying to say. Love is non-dual, so duality will be the, yeah. But I'm saying in this world, I'm not talking of the absolute world. Absolute reality की बात नहीं करे. Absolute reality में तो सिर्फ love है. Soul and परमात्मा और आत्मा. Love is ultimate, sir. Nothing can beat it. Wait. I understand that you're talking of non-dualism. Non-duality में, let me explain that absolute reality में love है, only love है. Divine, love. Okay? परमात्मा, आत्मा, ये सब अलग है. हम यहाँ materialistic world की बात कर रहे हैं, इस life की बात कर रहे हैं. यहाँ पे love का opposite क्या है? When I'm asking opposite, I'm talking of duality. Okay? तो duality में बताइए love का opposite क्या है? Love का opposite. Lack of love. Love का opposite क्या बता रहे हैं? Empathy. Empathy. Lack of empathy. Lack of empathy. हाँ, ठीक है. Okay. All right. और कुछ? और कोई? मैं वो वर्ड नहीं सुन रहा जो मेरे को सुनना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से अमित जी बताएंगे. हाँ, अमित ही बताएगा. Okay, Amit ji, go ahead. If you remember it, tell me. I had discussed this long time back with you. Maybe you remember. Tell me. क्या है opposite of love is? Fear. Absolutely fine. Oh, Let's acknowledge Amit ji for that. You remember it. Very good. आप लोगों से सीखता उसमें क्या? बहुत बढ़िया. That's why I knew that you would know it. That's why I asked you last.
Opposite of love is not hatred. Spiritual level पे बता रहा हूँ. Dictionary meaning में तो सीधा hatred ही आएगा. Love को opposite hatred. I love you, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. हाँ, actually they are saying I love you. इतना hatred है तो बोल क्यों रहे हो? Right? When somebody says, when your friend says or your partner says, I hate you, I hate you, I hate you, you're saying, okay. So you know that she loves you. Now you can ask her how, where to go and how to go, right? So you have to understand. समझना पड़ चाहिए क्या बोल रहे हैं. But then when I'm talking of opposite of love is fear. Because it is not an opposite we are talking of absence of love. Just like absence of light is darkness, absence of love is fear. And उसके फिर बहुत सारे branches हैं, roots हैं, branches हैं, leaves हैं, twigs हैं, fruits हैं, पेड़ है, बहुत कुछ है उसका. Similarly, love के बहुत सारे हैं. So everything, if you categorize into duality, it is all about love and fear. Two basic emotions. Love के अगर हम branches बनाएं, we will of course go through this one by one in the next sessions, right? But if you look at the love, give me the offshoots of love. Love के opposites क्या क्या होंगे? Offshoots, not opposite. Love के offshoots क्या क्या होंगे? विजय जी ने बताया empathy. Yeah, when he says lack of love is lack of empathy, Lust. which means? Lust. Huh? What is that? किसने बोला? आलोक जी? Lust. 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 Lust एक विकार है सर. काम बोलेंगे अगर तो translated into desires, but then when you say lust, it is a vikar called calm. It is not an expression of love, by the way. Okay, it is a vikar. Vikar is called a poison. So I will not call. It is a suppression of love. जो मैंने कहा था ना, expressing it naturally. So if you are experiencing and expressing love naturally, it will be expressed as what? It will be expressed as compassion, empathy, gratitude, okay, forgiveness. ये सब उसके natural expressions हैं. अगर उसको हम suppress कर दें, if you are not able to experience and express love the way you want to, or to whom you want to, or when you wanted to express, you could not express. Now it is suppressed. आप किसी को I love you बोलना चाह रहे थे, नहीं बोल पाए, suppress हो गया. It will come out as lust. Now it is a suppression of that natural emotion which has come out in an ugly form. Suppression of an emotion will always come out in an ugly form. Okay, so good, Alokji, that you brought up this emotion. It is very important to understand what is a natural expression and what is a suppressed expression. Okay, I hope I am clear. I hope I am clear to everybody. Yeah. तो ये विकार जो है ये कैसे आया? ये suppression के बाद आया. So you have to understand it that way. Natural expression क्या होगा? You see a child, see a 1-year-old child giggling happily. देखा आपने? बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं. I specifically hunt for these. A 1-year-old, 2-year-old smiling away, giggling away to glory, and you know. So it is a blissful sight. It will fill you with tremendous love. Yeah, or you see a small kitten playing. छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखा खेलते हुए, या छोटे से पपी को देखा खेलते हुए. What a sight! मजा आया था. So it's full of love. Nature, you see nature. Sometimes I fall in love with the rising sun. It's very strange to say that, but I actually fall in love. I'm lost. I'm completely lost. Okay. In fact, I remember that we were given a task and I climbed out on the top of the building just to see the sunrise for 1 hour. When it is pitch dark and when it is absolutely bright red sun, पूरा देखने के लिए 1 घंटा लगा था. तो हमको एक्टिविटी दी थी कि जाके देखो सनराइज को. And we actually saw that. And it is phenomenal. Let me tell you that. It will fill every cell in your body is filled with love. So expression of love can be absolutely thrilling. But if you suppress it, it will come out as possessiveness. It will come out as jealousy. देखा है? Jealous husband, jealous wife, jealous partner. Yeah. Possessive partner. You talk to somebody and he wants to kill you. Yeah. So these are suppressed form of love. How many of you can connect with what I'm trying to say? And similarly, absence of love is what? Hello? Yes? Yes, NLD? जम रही है बात कुछ. नहीं जम रही. अच्छा है, जम रही है. Okay, so if you want to share something, you should be more vocal. थोड़ा सा और बोलिए. Okay, I will बोल. बताऊंगा. Okay, fine. Great. All right. So everybody clear on this description of what I gave for love?
Any doubts? Any questions? Anything you want to discuss? Right. Now let us look at love. Oh, sorry. Let us look at the absence of love. Absence of love is what? Fear. What is the purpose of fear? पहले तो पर्पस ढूंढे ना. नेचुरल इमोशन है. कितने लोगों को fear हुआ है? आज तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको fear ना हुआ हो. Fear of death is the fundamental existence of life. So fear everybody has. और जहां पे लव नहीं पहुंचता वहां fear पहुंचता है. Correct? यानी कि वहां fear पहुंचता नहीं है, वहां fear होता है. So it is absence of love. So let us understand what is the purpose of fear. Anybody? What is the purpose of fear? You are born. Survival, Immediately survival. you are engulfed in the fear of death. जैसे ही कोई पैदा हुआ क्या होगा? पहला fear, मैं मरूंगा. पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है. जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है. तो fear of death is inbuilt into us. क्यों? क्योंकि आप कई जन्मों से यही कर रहे हो. You have that experience of body going away. That pain of death is there. And those who are not wise enough to understand that soul never dies, it is only the body changing form, they will experience the pain of death. So the fear death is permanent, not permanent. Death is something which is recurring for the body, and that fear of death is also recovering in every birth. So it is inbuilt into the psyche of the human brain. Mind में है वो, hardwired है fear of death. So now tell me, what is the purpose of fear? Fear का purpose क्या है? Anybody? Yes, Alok ji. Fear, I think it is a reflex to protect oneself. Very good. Reflex to protect Reflex oneself. to protect oneself. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Reflex to protect Correct, yourself. correct. Anybody else? One word. Okay. I will shorten your range of words. Only one word. एक word में बताओ. Purpose of fear? Sir, it leads to spirituality. No, that is not the purpose. Fear will never lead to spirituality. Think of it. You are saying the right thing, but your wordings are not right. आपको मालूम है? Ranjan ji, I have discussed this with you before, long time back. Yeah. To go towards love. Sir, Go you towards put the love. words, na? I understand that. Yes, Leslie, go ahead. Survival. Okay. Leslie, go Survival. ahead. Survival. Survival. Okay. So fear, very good. Survival is very good purpose of fear. आपको survive करना है, इसलिए जिंदा रहना है, इसलिए थोड़ा सा fear जरूरी है. Purpose of fear is survival. Very good. Purpose of fear is to protect yourself, to survive. और क्या? What is the purpose of fear? Anybody else? Fast. So Gunjan ji, I will take your answer as yes. Okay, it will put you on the spiritual journey. Okay, taken for granted. If you overcome that fear, let me correct it. If you overcome that fear of death, it will take you to spirituality. So that is what I was wanting to hear from you. Okay, so spirituality or love will come when you overcome that fear. See, it is like heads and tails. अगर आपको heads दिख रहा है, उसको tails कर दो तो love आ जाएगा fear की जगह पे. So instead of fearing death, you will be loving divine. Simple है. If you love divine, the fear of death is non-existent for you. If you experience love, there will be no fear. Let me put it that way. And if you are fearful, that is because there is no experience of love there. If you are having a fear, वो मेरे को मिलेगा या नहीं, वहाँ मेरे को छोड़ के जाएगा कि नहीं, वहाँ love नहीं है, वहाँ attachment है, वहाँ fear है. Love है ही नहीं. You are fooling yourself. कितने लोगों को रूट शॉक लगा. हाँ, ये क्या बोल दिया, मैं तो लव में थी, मैं कहाँ फेयर में पहुंच गई. या पहुंच गया. Yeah, you need to understand. Love can take different forms. You are misunderstood. Your attachment as love. How many of you feel? How many of you love your family and you are really attached to them? You say, I love you, beta. I am attached to you because I am attached to you. I love you. You think it is the same thing. Love is not attachment. Love gives freedom. Attachment gives fear. Need to understand. भाई मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये प्यार नहीं है, ये डर है. हम पूछते भी हैं, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं, झूठ बोल रहा है, छोड़ के जाएगा पक्का. बिकॉज द मोमेंट somebody says, पहली बात तो हम जब आई लव यू बोलते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
वो आई लव यू का जवाब नहीं देगी या नहीं देगा। वो दे देता है तो अच्छा आज तो देती है, पता कल बदल जाएगा, उसको कोई और मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगी, भाग जाएगा। तो यू डोंट ट्रस्ट देम, इवन इफ दे से आई लव यू, यू डोंट ट्रस्ट देम, and then you doubt them so much that they finally leave you disgusted with your approach. When they leave you, they say, देखा मैंने कहा था ना he doesn't love me, छोड़ गया। You throughout you were thinking that you are living in love, you are actually living in fear. So we will come to analyze fear more in the next session. Today we are already crossed 4 minutes, so I will not continue the discussion, but I hope this session was valuable for you. You have understood what is emotion, you have understood what is emotional intelligence, and we have seen the basic idea of emotion is what? Love. Human being, if you are in the human form, the only purpose of life is to experience and express love in a natural way. And if you express it naturally, it will come out as compassion, empathy, forgiveness, gratitude, contribution. And there are many other words which we will see later. Okay. But if it is suppressed, it will come out as possessiveness, lust, jealousy, and envy, whatever you can think of. Jealous partner, think of them. Over possessive husband, over possessive wife. They don't even give you the space to breathe. They are always on your throat. Correct? So, expression of love. And when the love is not there, it's all about fear. So, we will see more of fear in the next session. And we will definitely talk of love also later on. But today was only an introduction of love. So, whatever we are going to talk of is negative emotions of fear today in the next session. And we will see how we can understand the purpose of fear. Purpose of fear. Okay, I didn't tell you the purpose of fear. Purpose of fear, one word is what? Precaution. There is only one word, precaution. It will give you protection. It will give you survival. It will give you the way to survive. Take the precaution. हम आपसे बोलो प्लेन से जंप मारो, नहीं मारोगे। 10th फ्लोर से जंप मारो, नहीं मारोगे आप। क्यों? मर जाओगे, मालूम है। Right? Fear of death. But if you know that there is a safety net, and if you know the building is on fire, you have to jump, you will go ahead and jump. So, because precautions are there. वहां रुकोगे तो मरोगे, पक्का मरोगे। कूदने से शायद बच जाओगे, और ऊपर से सेफ्टी नेट है, राइट। प्लेन से कूदना है, नहीं कूदूंगा। पैराशूट है, हाँ ठीक है, प्रिकॉशन है, राइट। सो टेक द प्रिकॉशन एंड टेक एक्शन। द ओनली वे टू ओवरकम फियर इज टेक एक्शन। डर के आगे, डर के आगे जी, yes. So overcome action, you will transform your fear into what? Courage, bravery, fortitude. Paramveer Chakra. All this, why are they afraid of going to the border? Obviously they are. Bullets are spraying around all the soldiers. Think of it, war. They fight, overcoming the fear. Again, overcoming fear by what? Love for the country. देश की सेवा कर रहे हैं. Compassion, service to mankind, contribution will give them the power to overcome that fear, and then they can face the bullets. A mother jumping into the building to save the son, a 1 or 2-year-old son. Fear hai, bilkul hai, but love for the child is more than the fear. So fear is overcome, and she does an act of bravery. Making sense? A lot of food for thought for all of you. Think about it. In the next session, we will talk of the first basic emotion that we are going to talk of, and that is fear. Everybody okay with that? Let's have some quick sharing, and then we close the session. I'll extend this by another 5 minutes with your permission, and we will quickly close the session after this. So let's have some people share, especially those who have come after a long time. जो पहली बार आ रहे हैं, so let me first see who are there. Sushil Jain ji, welcome. Kumar Trasham ji, okay. Kumar Trasham ji, आप शायद पहली बार आ रहे हैं. Welcome. If you want to share something, how was the session for you? कुछ share करना चाहेंगे? Go ahead. कोई बोलना चाहेंगे? नए लोग जो आए हैं. Okay. All right. So let's have some people share. Anil ji, you came out with a terse comment. If you want to share more, please come up and share. How was the session? What are you taking away from the session? बहुत awesome. बहुत Awesome. बहुत अच्छा था. Okay. बहुत बढ़िया. Okay. तो क्या लेके जा रहे हैं सर? What are you taking away? अभी तो स्टार्ट हुआ है, बाद में अभी तो डब्बा खाली है, बाद में भर जाएगा तब बताएंगे. Okay. चलिए ठीक है. Welcome. So you're welcome to come into the session again. And आप पहली बार आए हैं सर? पहले भी आ चुके हैं?
अमित जी आपने इनवाइट किया? I had put it on various groups, including PYP, Delhi NCR. Okay. So, Kumar ji वहीं से है, तो thank you very much, Kumar ji, for joining today. Okay. He's doing some great work towards oneness. Okay. So, yeah. All right. Very good. Very good. Okay, Anil Kumar ji, welcome. All right. Good. So you are welcome to attend our further sessions on Wednesdays. So the link is with you. You can come here every Wednesday and attend the sessions. And today we are starting a new session, new series of emotions and emotional intelligence. We'll carry on with one emotion, and we will see a few basic ways how to go ahead in that. So we will see the purpose of the emotion. We will see how to experience it naturally, and we will see if it is suppressed, how will it come out. So it will give you the whole range of how to handle that emotion. You will get that intelligence or the wisdom to handle the emotion, and you will be able to raise your intelligence level, emotional intelligence level, to such a level that you will be very stable in your life, and the wisdom will help you to sail through all the situations, right? So that is what. Anybody else? और कोई share करना चाहेंगे? Priya, you want to say share something opening up for you today? सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि इमोशनली इंटेलिजेंस तब बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस कि अगर आप नेचुरल वे में उसको एक्सप्रेस करते हो। अगर हम नेचुरल वे में एक्सप्रेस करते हैं तो हम नॉर्मली अब दुनिया में बहुत इमेच्योर कहलाते हैं क्या? उसको मतलब खुशी है तो बहुत अच्छे से खुश हो रहे हैं, वो मैं समझ या गया आपकी दुखी है बात। तो आप रो रहे हैं, गुस्सा है तो गुस्सा निकाल रहे हैं, मतलब आपको तो बहुत स्टेबल रहना होता है, तब मैच्योर कहा जाता है। Okay, पर स्टेबिलिटी में am I audible? Again, network unstable दिखा रहा है. Audible? Yes, Yeah. yes, sir. So you have to first of all understand, in the next week we will see how to experience it naturally, how to express it naturally. I'm not talking normally. सोसाइटी में सब नॉर्मली करते हैं, हम नेचुरली करेंगे, फर्क है। नॉर्मल और नेचुरल में क्या फर्क है मालूम है? नॉर्मल वो है जो सब लोग करते हैं और हम मान लेते हैं कि ये सही है। Natural is the way a human being has to do. That is natural. We don't do things naturally. We do things normally. हम नेचुरली लाइफ को जीते कहाँ हैं? नेचुरल वे ऑफ लिविंग लाइफ। सर वही हुआ ना कि आपको खुशी है तो आप खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो अगली बार देखेंगे ना नेचुरल तरीका क्या है। Yes. Suppressed है, everybody is suppressed. Who is expressing emotions naturally? Everybody is suppressing it and it is coming out in ugly form. Road rage क्या है? You don't know how to experience and express anger. Road rage बन गया, लोगों के 36 टुकड़े किए जा रहे हैं। रेज है ये, गुस्सा नहीं है, ये रेज है, ये एंगर नहीं है, ये रेज है। समझो, ये नेचुरल नहीं है। This is not the way to naturally जो सप्रेस कर लेता है सर उसी को तो इमोशनली बैलेंस्ड और इंटेलिजेंट मैच्योर पर्सन कहते हैं। You have not understood the session then. What did I say? If you experience it naturally, then you will be able to balance your life. Then love को आप love की तरह experience और express करोगे, suppress करोगे, lust बन के निकलेगा. All the rape, murders and everything is happening. Acid attack and everything is a outcome of this suppressed emotion of love. Rejection. Rejection is what? You can't accept love. Get that point. Naturally, hold on. Naturally नहीं कर रहे हैं, हम normally कर रहे हैं. That is the difference. We will understand what is natural, what is normal. Do the homework. Next week we will talk about this. Every emotion we will see how to experience and express naturally, not normally. I'm repeating that. Normal में तो acid attack होगा, उन्हें ना कर दी ये ले acid. That is normal. That is not the natural way. Natural way is okay. Bless you. God bless you. Ciao. That is the natural way. If you don't like me, if you don't want to spend your life with me, okay, no problem. Find another one. मेरे को भी दूसरी मिल जाएगी, तो आखिरी लड़की थोड़ी ना। That is the intelligence you have to understand. कुछ कार्मिक लेसन से सीखो और आगे बढ़ो। मारने की जरूरत नहीं है किसी को. All the violence will go out of the society if you behave naturally, but you are trying to behave normally. That is why all this drama tamasha is happening. Understand it? Okay. We will continue this discussion in the next week, or maybe one-to-one you can have. Yes, Maniji, you wanted to share something. Go ahead. Sir, I wanted to ask, and my question was... Not see Maniji, go ahead. You wanted to share something. Okay. Yes, I wanted to ask you something. Maniji, are you there? Sir, can you hear me? Yeah. Yes, okay. yes. No, I can't hear her.
Yeah, we can all She's hear audible. you except Shashi Dhar ji. Okay, hold on. Am Hold I on. audible now? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. So I was just all the time while you were, I mean, sharing what is emotional intelligence and what are emotions, I was just able to understand कि अगर हम ये, if we master the art of detachment, will I or anyone will be able to learn this art of, anger management, or you say emotional intelligence. Is managing detachment will lead to emotional intelligence? Actually, there are two different topics, but they are connected. Okay. Detachment So is if- something different. Detachment is something different. Okay. But detachment can be easily misunderstood as apathy, no emotion. So that's why I don't want to discuss that right now. So I will say these are two different things. Okay. Non-attachment is different thing. I will not say detachment. Non-attachment is a different thing. It is attachment is rooted in fear. So non-attachment will lead you to love. That's what I can suggest you there. Okay. So that distinction is clear there. And when you talk of emotions, you have to experience and express emotions, whatever be the emotion, whether it is positive or negative. It has to be expressed naturally. It has to be experienced naturally. That is the catch. That is what we will be focusing on today. Correct? So we will stick to that. And we will talk of attachment or non-attachment at a later stage. Right? All right. Actually, attachment, non-attachment will lead you to the domain of intellect, not emotion. Raga Dvesh. Non-attachment will free you from Raga Dvesh, which is the domain of intellect, judging, evaluating. Okay, that's a different topic. But right now, concentrate and focus on emotional intelligence. Though your point is, I understood what you're trying to say. It's a very good point, and it's a very good understanding. So first of all, let's acknowledge Maniji for that. Yeah. Thank you, sir. Yeah, and we will discuss this in detail, maybe in the subsequent topic when we come to intellect. Right now, we are in emotion. Right? So Maniji, is that okay with you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Bilkul. good. Thank you. Thank you. Thank Yes, you so Anirudh ji, much, go sir. ahead. Anirudh ji, go ahead. सर, ये इमोशनल इंटेलिजेंस को जो मैंने समझाया कि दूसरे की इमोशन के साथ कैसे हैंडल किया जाए, अपनी इमोशन को सर, दूसरे का नहीं, अपना। ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अपनी इमोशन को। नहीं, एक तो अपनी इमोशन देखनी है और दूसरी की इमोशन के साथ भी एडजस्ट करना है, उसको समझना है, ये भी आ जाता है ना इंटेलिजेंस। अभी सिर्फ अपने के लिए। अच्छा, अपने के लिए। अपने इमोशंस को कैसे आप एक्सपीरियंस करोगे और एक्सप्रेस करोगे। सामने वाला कुछ कर रहा है, बाहर की दुनिया में वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति होगी, वो जब आपके सामने आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आपकी सिचुएशन में कौन से थॉट्स, उसको छोड़ दीजिए, अब हमारे थॉट्स क्या ट्रिगर हो रहे हैं उसको हम देखेंगे, है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमको अपने इमोशंस के लिए। हाँ जी, गो अहेड। दूसरे की इमोशन से अपने इमोशन को एडजस्ट करना है, राइट? एडजस्ट नहीं करना, पहले समझना है और उसको नेचुरली एक्सप्रेस करना। सर, इसको अगर मैं इस वे में लेता हूँ कि अगर कोई दूसरा इमोशन है, कोई किसी को जो सामने कोई इमोशन हो रही है, तो उसमें अगर कई इमोशन तो ऐसी है जिसको मैं एग्री करता हूँ। अगर वो जॉय कर रहा है, आई आल्सो लाइक दैट, एक तो वो हो गया। अगर जिसको मैं एग्री नहीं करता, उसको या तो एक्सेप्ट करूंगा या उसे डिस्कस करूंगा, एडजस्ट करूंगा उसके साथ बात करके। एम आई राइट? ओके, आगे फिर उसके बाद एडजस्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा? बस यही है, जब या तो इमोशन पे एग्री कर लिया तो ठीक है, जब इमोशन पे एग्री नहीं किया, दूसरा बंदा गुस्सा कर रहा है, कुछ कह रहा है, मैं एग्री नहीं कर रहा, तो उसके साथ या तो एक्सेप्ट करूंगा या उसके साथ डिस्कस करके एक उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ कर उसको शॉर्ट आउट करूंगा और फिर उसका एक नया रास्ता निकालूंगा उसके साथ मिलकर। तो उसको आप गाइड कर रहे हैं बेसिकली, है ना, उसके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। मैं जो इमोशन है जिसमें मैं एग्री नहीं करता, तो उसको उसके साथ बातचीत करके ही खत्म कर सकता हूँ ना जी। ठीक, दैट्स अ गुड वे टू अप्रोच हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। अभी हम औरों की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरी जो इमोशंस हैं, मैं उसको कैसे एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करूं। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल ही अगर हम लें, इसी बात को लेते हैं, सामने वाले ने कुछ कहा या कुछ किया, कुछ बातों से मैं एग्री करता हूं, तो
बल्ले बल्ले हो गई, दोनों मजे कर रहे हैं, मस्ती वो कर तो रहे हैं, खुशियां हाँ मना जी, रहे हैं, है ना? ठीक है तो जी, जॉय पॉजिटिव है, चलेगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी, है। अब अगर उसने बोला कुछ और मैं उससे एग्री नहीं करता, हाँ जी, है ना, तो हाँ मेरे जी, कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे बताइए? हाँ, आपने कुछ जब जो कहा और मैं एग्री नहीं करता, तो मेरे कौन मैं से एग्री नहीं इमोशंस करता ट्रिगर तो होंगे? उसका तरीका ये है, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या उसके साथ उससे डिस्कस करके अपनी जो इमोशंस है उसको सॉर्ट आउट करूंगा, सर, प्रॉब्लम को डिस्कस तो हम एक टॉपिक करेंगे ना। हाँ जी, अब मान लीजिए आप पॉलिटिक्स की मैं टच करना नहीं चाह रहा था, या मान लेते हैं इसमें आप बोलते हो शाहरुख खान बेस्ट है, मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन बेस्ट है। हाँ ठीक है जी, जी, एक टॉपिक ले ठीक रहे है, हैं हम सिर्फ, ठीक ठीक है? है सर, तो ठीक है आपने सर, कहा शाहरुख खान ने इतने सारे, उसे बहुत सारे उसके आपने प्लस पॉइंट्स बता दिए, मैं एग्री नहीं करता आपसे। ठीक है, तो मेरे ठीक है, इमोशंस क्या होंगे बताइए? इमोशंस की बात कर रहे हैं, इशू की बात नहीं कर रहे। उस केस शाहरुख में खान बड़ा मैं है या अमिताभ बड़ा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप उस केस में पैशनेट हो शाहरुख खान के, मैं पैशनेट हूँ अमिताभ के लिए। सर उसका सोल्यूशन ये है, उस केस में आई विल एक्सेप्ट द अदर पर्सन व्यूज। Why? Why should I change my view? For me, नहीं Amitabh, I'm an Amitabh fan. I नहीं will support Amitabh only. Why should I सर, change your view? आई एम कीपिंग माई व्यूज कि शाहरुख खान इज द बेस्ट हाँ एंड फॉर हिम आमिर खान इज द बेस्ट, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इमोशंस ट्रिगर नहीं हुए ना आपके, यही तो मैं बता रहा हूँ। इमोशंस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करिए ना। आप बोलो वो भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, दोनों ग्रेट है, फिनिश। लड़ाई किस बात पे हो रही है? लड़ाई हो रही है शाहरुख खान का नाम लिया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब मैं इस गुस्से को कैसे एक्सपीरियंस करूं और कैसे एक्सप्रेस करूं, दैट इज माई इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल। अब ओके आपको सर, बात समझ में आई? बात इशू ठीक की है, नहीं हो रही है, उस इशू से जो इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करूं मैं, बात इस बात की हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने छोटी सी बात ले ली ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अगर अभी ऑपोजिशन और बीजेपी की बात कर लें तो 5 दिन तक लगातार डिस्कशन चलेगा ये जूम पे। सर आई डोंट फिर वांट तो टू गेट वो इनटू दैट। ईगो वाली बात हो गई कि वी शुड एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज ही इज, सर, टॉपिक फिर तो इमोशन प्रॉब्लम नहीं की है हो जी रही हमें। है, एक्सेप्टेंस की बात नहीं सर हो रही। बाकी सब तो ठीक है, नहीं, अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट। हाँ जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट। ये मैं जीत गया, मैं बिल्कुल, जीत गया। वेरी गुड, ओके, सो ऑल अंडरस्टैंड आर बेस्ट, अनुराग जी, ऑल आर ग्रेट। अनिरुद्ध जी, बात समझिए, हाँ जी, बात इसी की नहीं हो रही है, इशू ईगो की नहीं हो रही है, ये टॉपिक ईगो का नहीं था ना, ये इशू ये ठीक हो है रहा है सर, कि मैं कैसे उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं। इमोशन ये इशू से हमारा टॉपिक का डिस्कशन ये था, मेरे इमोशन अगर ट्रिगर हो रहे हैं ठीक तो है सर, उसको कैसे मैं एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करूं नेचुरली, ताकि मैं ना दूसरे का सर फोड़ सकूं, ना मैं खुद परेशान हो जाऊं, और एक अच्छी लाइफ जी सकूं। दैट इज द पॉइंट। इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, मानेंगे या नहीं मानेंगे इज ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। करेक्ट, दैट वाज द पॉइंट। वी विल सी मोर ऑफ इट, अभी तो ओके शुरुआत है, अगले सेशन में और बात करते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर लास्ट एंड फाइनल कॉल? किसी को कुछ बोलना हो तो अमित जी, हमने अनऑफिशियल सेशन को ऐसे ही खींच लिया रिकॉर्डिंग के साथ ही, हाँ, सो एवरीबॉडी विल वॉच दिस। ऑल राइट, so with this we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy great time, enjoy great life until we meet again. Aham Brahmasmi. थैंक यू।